Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, daily at 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis from Sunday to Thursday. So आज जो है 15 नवंबर है, today is 15th November to Tuesday and we are here with the Hindu analysis of today. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. Okay. So three important articles are on the first page. एक ये है Kerala High Court scraps Vice Chancellor's appointment. This we are actually discussing it for the past 1 week. है ना, ये वाली न्यूज कई बार आ रही थी फर्स्ट पेज पे, the appointment of vice chancellors and all. So go and watch the previous videos of the last 1 week. So you will get you can say the explanation of that. वहां आपको इसका explanation मिल जाएगा. Then here is the article, retail inflation cools to 6.77% in October from 7.41% in September. This we will be discussing. ये वाली article हम लोग discuss करेंगे. Then here is an article, atomic energy hydrogen power India's net zero plan. So इसको भी हम लोग discuss करेंगे because it is related with the recent COP27 summit that happened in Sharm el-Sheikh, Egypt. ये उस article से related है, उस topic से related है. COP27 जो कि अभी रिसेंटली शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल. सो विल बी डिस्कसिंग दिस. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, बट बिफोर दैट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. The question is, what is the inflation range that has to be adhered to while formulating monetary policy? Your options are 2 to 6%, 4 to 6%, 2 to 8%, 0 to 6%. तो क्या इन्फ्लेशन टारगेट है जिसको अध्ययन जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, यानी इन्फ्लेशन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त. सो आरबीआई और द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शुड फॉलो इट. सो व्हाट इज द रेंज? कैन एनीवन टेल मी? यस, गुड. ऑलमोस्ट ऑल हैव आंसर्ड इट करेक्टली. A is the right answer. Anand, Aditi, Namrata, Hariom, Nisha, Debadrita, Smita, Riya Verma, you all are right. So the right answer is 2 to 6%. ठीक है. So the government or the RBI has to ensure that, let's say for example, inflation has to be between, let's say this is 2% and this is 6%. So inflation has to be somewhere here. It should not cross there and it should not go down, है ना? ना ही 6 से ऊपर जाना चाहिए, ना 2 से नीचे जाना चाहिए. So that has to be what we call it as lower limit and upper limit should be adhered to. यानी जो 2% से कम भी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए और 6% से ऊपर भी नहीं होना चाहिए. इन्फ्लेशन को we call in हिंदी as महंगाई, आप समझते हो गया ना? Rise in prices of goods and services over a period of time. That's called as inflation. तो देखो आर्टिकल क्या कर रहा है. India's retail inflation cooled to 6.77% from 7.4% in September. So in September, retail inflation was 7.41%, and in October it became 6.77%. तो पिछले महीने 6.77% हो गया. कूल डाउन मतलब थोड़ा सा कम हुआ है. This here is the graph you can see. So this was perhaps of September और ये वाला जो नीचे आ गया ये अक्टूबर का है. ठीक है. So it has actually little bit gone down. Okay, so it is a good thing. Ideally कहाँ पे होना चाहिए? It should be between, जैसे 2% to, ये वाला 2% होगा कहीं पे, है ना? नहीं, ये 3 है ना, तो इसके नीचे होगा 2% यहाँ होगा कहीं and 6% यहाँ. So it has to be between 2 to 6%. यहाँ पर होना चाहिए कहीं पर. So still it is actually above 6%. अभी भी ये the upper limit के ऊपर ही चल रहा है. Even so this is the 10th month in a row that inflation has been over 6% upper tolerance threshold mandated by RBI. यानी कि ये 10वां महीना है जिसमें ये 6% वाला लिमिट जो है वो क्रॉस कर गया है. So here you can see it actually crossed, I think somewhere in after January and February. Yes. Okay. So लगभग फरवरी के आसपास क्रॉस कर गया था लिमिट. So वही बता रहे हैं in the last 10 months, this is the 10th month. I mean, this means October is the 10th month where the upper tolerance limit of 6% has been crossed. So still the inflation is not under a 2 to 6% band. Still it is higher. We have to bring it below 6%. So right now it is 6.77%. तो अभी भी 6% से ऊपर है, 6.77% है जो कि 6% से ऊपर चल रहा है. So we need to bring it down more. Yes. Urjit Patel committee said yes. Vinayak Joshi, very good. So ये जो लिमिट है 2 to 6% का, very good Vinayak Joshi. This was actually set by Urjit Patel committee.
Good. Okay, yes. Now, so that is what is being discussed here. एक और question I want to ask some more questions. See, in nowadays the Hindu analysis, I'll be asking more questions because your exams are near. Okay, so I'll be discussing more questions so that it can be a sort of a revision. So those who are from my paid batches, I have taught these things in paid classes. So I hope you should be answering it. At least those who have watched my paid classes should answer it. What is basis point? Anyone? Everyone, please press the like button. सबको like button press कर दो. We are seeing 15 likes, 62 is watching. So सबको फटाफट like button press कर दो. Yes, some people are saying D. Majority are saying C, but some are saying majority are saying D, but some are saying C. Yes, Vinayak Joshi is right. Very good, Vinayak. Rakhi Singh is also right. Srushi Sharma, Debadrita, you all are right. Aditi Agarwal, yes. So the right answer is option C. ज़्यादातर लोगों ने option D कर दिया 100%. No, it is 1 basis point is actually 0.01%. These things I have explained in paid classes. So at least those who are paid batch students should answer it. देखो इसमें लिखा हुआ है in the same class, in the same article, ये वाली article में लिखा हुआ है. So here it is written 50 basis point, लेकिन but at a lower pace than 50 basis point, 100 basis point is equal to 1%. Is it written here? So it is saying कि 100 basis point is equal to 1%. This is written in today's article. So it means 1 basis point will be, divide कर दो उसको 0.01%, है ना? So 1 basis point would be 0.01%. It is written in today's article. So even if you have not gone through this, I mean, at least if you have read today's article, you could have answered it, है ना? हाँ, 1% is 100 basis point. Yes, हरिओम. So इसका मतलब है कि 1 basis point is, देखो ना, देखो, अरे मैथ्स देखो, मैं बताता हूँ, ऐसे करो. Let me explain. 1% is equal to 100 basis point. ये लिखा है ना, the हिंदू के एडिटोरियल में. Okay. So now, अब इसको जो है नीचे, इसको जब यहाँ ले जाते हैं तो डिनोमिनेटर में चला आता है ना? So it will become 1 by 100% will be 1 basis point. This is a basic maths, है ना? So 0.01% is equal to 1 basis point. ये तो कैसे 9th तक पढ़ाया जाता है ये मैथ्स, नीचे जाना 100 डिनोमिनेटर को इधर उधर करना, है ना? So that is what it says. ठीक है? Is it clear? है ना? Okay. So let's move on to another article, another question actually. I have told you that I'll be asking more questions now. Who among the following is the ex officio chairman of Monetary Policy Committee? Your options are Finance Minister, RBI Deputy Governor, SEBI Chairman, RBI Governor. This also I have explained in detail in our paid classes. Monetary Policy Committee, how many members are there, who is the chairman, ये सब लोगों ने बताया पूरा. Yes, what is the right answer, guys? कुछ लोग A बता रहे हैं, कुछ लोग D बता रहे हैं. Yes, D is the right answer. देवाद्रिता, सुरुचि, अस्मिता, सोनल, पांडे, हरिओम, प्रीति, रिया वर्मा, शुभम, नैन्सी, all are right. So it's RBI governor. Ex officio chairman means by virtue of his post. So whosoever will be the RBI governor will automatically become the chairman of Monetary Policy Committee. So go and find out how many members are there, what is the job of Monetary Policy Committee, etc. ये सब जाके पढ़िए कि कितने मेंबर होते हैं, क्या जॉब है उसका, कौन चेयरमैन है. So the current, let me show you here, it is written. देखो इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था. Economists expect the central bank's monetary policy committee, which earlier this month deliberated on explaining to government and all. So ये word ना monetary policy committee, it comes in news almost every month. हर महीने monetary policy committee एक बार news में आता है. Who is the RBI governor by the way? Shakti Kanta Das, right? Debadrita, correct, हाँ. So Mr. Shakti Kanta Das is the governor of RBI currently. Okay, yes. Good. So T is the right answer. Yes, it's a 6-member committee. Very good. So let's talk about another article, जो कि first page में था, and it talks atomic energy, hydrogen power, India's net zero plan. So this was an article. So let's ask some questions for you. Then I will be explaining. Who among the following is the Environment Minister of India? And these are your options: Mr. Narayan Rane, Mr. Giriraj Singh, Mr. Ashwani Vaishnav, Mr. Bhupendra Singh. इन चारों में से इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है इंडिया के, आपको बताना है.
So the ministry is called as Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So we write MOEFCC. Okay. So what is the right answer? Yes. Anant, Hariom, Vinayak, Shubham. Yes, Anushka, Smita, Devat. You all are right. I cannot take everyone's name. Mr. Bhupendra Singh is the right answer to this question. देखो यहाँ उनकी photo ही बनी हुई. This one is the Environment Minister of India. Okay. One more question. Then we will move forward. So please read the question carefully and then answer it. गौर से पढ़िएगा, then answer कीजिएगा. PM Modi announced in X that India would achieve net zero emission by Y. So you have to tell what are X and Y respectively. X and Y respectively. Okay. So answer this. Read it carefully and then answer it. Because this was mentioned in today's first page, The Hindu, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए. A, D. अच्छा, जो लोग D बता रहे हैं रीजन भी बताए ना. If you are saying D, मान लीजिए कुछ लोग D बता रहे हैं, so you have to tell what is the correct option then. COP 26, 2070. Yes, Hariom Abad, very good, fantastic, perfect. So D is the right answer actually. Yes, Debat Rita, you all are right. तो ये COP 26 में मोदी जी ने कहा था. So in COP 26 last year, that is Glasgow. Yes, Glasgow. In Glasgow, COP 26, PM Modi said that India will achieve net zero by 2070. ठीक है? Okay? तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मैच हो रहा था. None of the above. मतलब the answer should be COP 26, 2070. ठीक है? This should be the correct option. So here D is the right answer to this question. Yes, Vinayak Joshi, you all are right. Sonal, Ajit, Aman Kumar, you all are right. Okay. So here it is written, India announces long-term strategies at COP27. It will help nation carbon neutral by 2070 and all. Okay. Which was announced by PM Modi last year. लिखा है ना? So COP26 में PM Modi announced that we will achieve net zero emission by 2070. And how to achieve it has been announced this year in COP27 by Environment Minister, है ना? कि कैसे उसको अचीव किया जाएगा, तो उसका क्या क्या रोड मैप है, डिटेल्ड रोड मैप. So here you can see. Let me show you. So yes, first is National Hydrogen Mission launched in 2021 aims to make India a green hydrogen hub. So I hope you are aware that hydrogen as a fuel produces almost negligible or very less pollution. तो hydrogen fuel जो होता है ना, उससे pollution बहुत कम होता है. तो National Hydrogen Mission उसी के लिए लॉन्च किया गया. At least a 3-fold increase in nuclear capacity by 2032. So जो nuclear energy से electricity produce होता, right? So electricity produced through nuclear energy will be increased by 3 times, है ना? That is what the idea. Because these are renewable energies, है ना? Achieving ethanol blending target. Blend मतलब होता है mix करना. Mixing ethanol, है ना? Of 20% by 2025. Maximizing use of electric vehicles in public transport. So instead of vehicle made of petrol and diesel, we'll be coming up with EV, electric vehicles. अब तो कार भी आने लगी है, buses भी, now we are having buses of electric vehicles. So we need to spread this. कि electric buses should be there, electric cars should be there, है ना? To reduce the pollution and all. खैर. Then other things are increased climate financing, means we'll be investing more in, you can say, more money should be given for climate change and all, for controlling climate change, है ना? So that is this is the target of Paris Agreement. ये मैंने आपको बताया भी है many times, है ना? This is Environment Minister Mr. Bhupendra Yadav at COP27 in Egypt. Okay. Yes. Yes, that is what is being discussed. So net zero by 2070 announced by PM Modi at Glasgow. That is last year COP26. ये से मैंने question आपके लिए उठाया है. And questions I am giving you so that you can try to attempt more and more questions. Okay. So let's move on further. Guys, everyone please press the like button. We are seeing only 22 likes, 64 is watching. So सबको एक बार फटाफट like button press कर दो. Everyone. फटाफट. Yes. Now, the next is Supreme Court says forced conversion may affect national security, freedom of religion and all. So basically someone has filed a petition against forced conversion. So it has to be stopped. So Supreme Court said, yes, forced conversion is, I can say, it will affect national security and freedom of religion. So Solicitor General Tushar Mehta said, forced conversion were rampant in tribal areas, giving of rice, wheat, clothes, etc. can never be a ground for asking a person to change his conscience. मतलब क्या होता है, कई बार जो कपड़ा देके खाना देके जो लोग गरीब हैं उनको कन्वर्ट करा दिया जाता है and all. So that is an allegation that
sometimes they are given food or something like that. If a person is poor, she can easily convert, because if he gets food, ration or any other thing, he needs desperately, and his religion or conscience can be easily changed. So now, so the Supreme Court is talking about freedom of religion. Now the question is, which article of Indian Constitution talks about freedom of religion? कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है? Which article talks about freedom of religion, or you can say freedom of religion, or right to freedom of religion as fundamental right? Yes. What is the right answer? Yes, the right answer is yes. Sonal Upadhyay, Ajit Kumar, Asmita, Hariom, Anand Singh, you all are right. Article 25 of Indian Constitution actually talks about freedom of religion. Okay, so freedom of conscience bhi likha rehta hai, kai baar it might be written freedom of conscience. So you can understand it is talking about 25. Okay. Okay, yes. Let's move on further. Arey, ek minute. Now, there was an article on first page, second half. PM Modi in Bali for G20 meet to focus on global issues. मैंने कई बार discuss करा है. We have discussed so many times that this year G20 summit is happening in Bali, Indonesia. मैंने कई बार discuss करा है. So I have told you that yes, today is 15th and now he has reached Indonesia. You can see his photo, है ना? So let's see. Things will be coming. देखो, Indonesian President Joko Widodo, यही मैंने कल question पूछा था. Yesterday I asked this question, that who is the host of G20 summit? So it is Indonesia. So Indonesian's president, Mr. Joko Widodo, is the host. ठीक है? So याद रखिएगा ये. Okay, so let's move on. Before that, those who are attempting CLAT or ALET this year, this is a very good test series. You can go for it. 45 plus marks, 20 CLAT, 25 non-CLAT mock test, 9,000 plus practice questions, 3 All India Open mock test, test series curated by NLU alumni based on actual exam pattern, etc. would be there. And this is the last lap to CLAT 2023. We are running at 9 p.m. Okay. Please subscribe to our channel also. And these are the, you can say, upcoming classes. They say today is 15th. So kal hoga, tomorrow at 9 p.m. with Nivedita ma'am. 19th ko with Abhimanyu sir, and 20th ko with Abhimanyu sir. So you can watch this session. Please subscribe to our channel. Everyone, subscribe to the channel and press the like button. Everyone. Yes. Now let's talk about editorials. अब हम लोग editorials की बात करते हैं, and these are 4 articles. So first let's talk about these top 2 articles. The shape of Indian economic pie must change, and here is an article about mutual benefit. So first he's actually talking about Indian economic pie. ठीक है, pie समझते हो, जैसे इसको काट के जैसे pie chart होता है ना, ये हिस्सा इनको मिलेगा, ये हिस्सा इनको मिलेगा, this हिस्सा है ना. So this part will be given to this community, this should be, that's called as pie, है ना. So basically he is actually talking about many things. One of them is EWS reservation. मैंने इसको काफी detail में we have already discussed, and 103rd amendment and all. Okay, so inserted article 15 clause 6 and article 16 clause 6, right? It was upheld by Supreme Court in Janhit Abhiyan versus Union of India case. Case का नाम याद होना चाहिए, 3:2 and all, right? Now, which remedies are justifiable and all? So the questions were reservation in jobs and education are legal remedies, subsidies and freebies are material. तो ये भी case गया था Supreme Court में recently. It is also the matter is pending there in Supreme Court. So basically saying the fundamental questions about EWS was quota on top of other quota is that total number of people discriminated crossed 50%. So that 50% limit actually has been crossed. Now since Supreme Court has allowed, this 50% limit has actually crossed. The question before the court was whether opportunities can be reserved for economically weaker section regardless of their societal status and all. ये सब उसी को discuss कर रहे हैं. Clearly, the shape of economy is distorted. Decent jobs and social security are available to few. Good education and healthcare is not available to all. तो ये बोल रहे हैं कि जो decent jobs है, ये social security. You understand social security? जैसे होता है ना PF, NPS and all, है ना, ये सब जो pension schemes and all, social security benefits, ये बहुत कम लोगों तक ही सीमित है. And good education and quality healthcare is not available to all. यानी अच्छी पढ़ाई, तालीम और health, यानी proper health जैसे hospital हो, high quality and all, are not available to all. Until the pattern of economic growth changes to generate sufficient employment and government can deliver social security to all, issues about fair distributor of opportunities and the need for subsidies will become harder for the justice system and government to resolve. ठीक है?
तो ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक पैटर्न को नीड्स टू बी चेंज एंड ऑल, इसी की वो बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैव बीन इंक्रीजिंग. यस, इट इज सेड कि आफ्टर कोविड-19 इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज काफी बढ़ गई है. इनफैक्ट इन द वर्ल्ड आल्सो, इन इंडिया आल्सो. मतलब पीपल हु आर रिच बिकमिंग मोर रिच, पीपल हु आर पुअर आर बिकमिंग पुअरर. Governments are struggling to meet conflicting demand of ease of doing business and ease of earning and living and all. So ये सब अभी भी एक बड़ा समस्या है, issue है. It's still an issue. On the left, populism has a socialist voice. It demands rights for all workers across races and religion. तो एक चीज और ये है कि yes, कि the socialist voice says कि yes, they demand the workers' right and all, right? And at the same time, there are businessmen or you can say industrialists also. So the rights of both has to be balanced and all. ठीक है. Then he is actually quoting, he is going actually too much in detail. इतना detail आपको नहीं जाना है. Thomas Piketty is a very famous economist. ठीक है. He has written a book, Capital and Ideology, where he has actually said कि historically there were three classes: clerical, religious and nobles and warrior, है ना. तो एक religious class जिसको priest कहते हैं, क्लरिकल जो नॉर्मल क्लास होते हैं, और नोबल्स एंड वेरियस जो किंग क्वीन के लोग होते हैं ना, किंग्स एंड हिज लाइज. तो क्लरिकल नहीं, क्लरिकल रिलीजियस तो एक ही में आ जाएगा. ठीक है. नोबल एंड वेरियर क्लास एक में आ जाएगा एंड कॉमन मैन एक में आ जाएगा. ठीक है. सो एक्चुअली ही हैज क्लासिफाइड दैट सिंस इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री, देयर आर थ्री सोसाइटीज. मतलब इन वन कंट्री देयर कैन बी थ्री सेक्शंस. वन इज रिलीजियस क्लरिकल, मींस प्रीस्ट class, priestly class. Second is king class or the aristocracy class. The third is common man. So he explains how the merchant and financial class later emerged and became dominant. फिर वो बताते हैं कि इन तीनों में से जो मर्चेंट था, एक नया क्लास उभरा और वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया, वो मर्चेंट क्लास. So now you can say it's modern day industrialist या businessman कह सकते हो, big businessman and all. So he has gone too much in history, so I'm not going in detail. Then he is saying similar is the concept, might be you can implement similar type of things can be said to be for India also. Then Piketty says every human society must satisfy its inequality unless reasons for them are found in the whole of political social edifice. तो कोई बहुत detail में जा रहे हैं. I'm not going in detail because he is telling the economist Thomas Piketty's philosophy and ideas, and I don't think they will be asking this much in exam. So that is why I am not going in detail. Then he has talked about US Civil War, Abraham Lincoln, money will cease to be the master and become the servant of humanity, and democracy will rise to the superiority of money, power and all. So he is quoting Abraham Lincoln etc. कि नहीं, हर चीज money नहीं होता है ना. That's fine. Different people actually have different economists, different scholars have different opinions about this, है ना. फिर एक दो बहुत famous फिलोसफी है इकोनॉमिक्स की, एक फ्रीडमैन, थॉमस फ्रीडमैन की, एक कीन्स की है. सो वी यूज केनेसियन इकोनॉमिक्स, ये पूरा पढ़ाया ही जाता अलग से. केनेसियन इकोनॉमिक्स इज देयर. देन थॉमस फ्रीडमैन एक्चुअली ही इज अ सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल. तो उनकी थोड़ा सा फिलोसफी अलग है. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अदरवाइज बिकॉज आई डोंट थिंक दे विल गो टू मच इन डीप. सो जस्ट हैव सम बेसिक आइडिया दैट द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट इन डिटेल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड ऑल. जो कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए. सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्किंग एज पर्सन. यस, दैट इज ट्रू. वी हैव अ ह्यूज यूथ पॉपुलेशन, नो डाउट अबाउट इट. एंड वी यूज द वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर दैट. ये सब वर्ड एग्जाम में कभी कभी लिखा होता है पैसेज. डेमोग्राफिक डिविडेंड, इट मीन्स द बेनिफिट वी कैन गेट फ्रॉम द यूथ पॉपुलेशन. दिस इज द वर्ड यूज्ड इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. ओके, इट मींस जो फायदा यूथ पॉपुलेशन, अगर इंडिया में बहुत ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, उसको प्रॉपरली स्किल, एजुकेशन, स्किल दे दिया जाए तो बहुत फायदा दे सकती है. उस बात को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. ओके, यस, इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड. हाँ, एक बात ये भी है कि इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, ये भी अफसोस की बात है. So that is also a serious issue. The country's problem of dividing the economy required to rectify historical, social, new economic cannot be resolved merely by judging whose needs are greater and all. तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इनइक्वालिटी को सिर्फ मतलब रिजर्वेशन वगैरह दे करके शायद उतना रिड्यूस नहीं किया सके. वी नीड टू लुक एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं. द शेप ऑफ इकोनॉमिक माइंड मस्ट चेंज सो दैट मेजॉरिटी बेनिफिट्स मच फास्टर दैट टाइनी माइनॉरिटी टॉप. तो ये बता रहे कि देखो जैसे क्या होता है, वो छोटे से आबादी जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत बड़ी सी आबादी जिसके पास लेस मनी है ना. एंड दिस हैज मोर मनी. तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा हो कि इसको ज्यादा बेनिफिट हो, राइट. सो ही सेइंग कि दोज हु आर एट एक्चुअली बॉटम आर फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ग्रुप. मेजॉरिटी यहाँ पे रिलीजियस वाइज नहीं है, मतलब मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है. जो एक बड़ी तादाद है जो कि अभी भी उतना रिच नहीं है,
तो गवर्नमेंट की पॉलिसी उनको फेवर करे ताकि वो रिच बने। जो माइनॉरिटी ऑन टॉप है, यानी जो थोड़े से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको, वो ऑलरेडी रिच है, तो फेवर जो है वो इनको करना चाहिए, दोज हु आर अ बिग मेजॉरिटी बट दे आर हैविंग लेस मनी। हाँ, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। Okay, yes, so that is what he says. He has written a lot of things. So basic idea we have already discussed. Now let's talk about both India and US stand to gain by enhancing cooperation on trade. Look, actually क्या है, ट्रेजरी सेक्रेटरी वहां होती है यूएस में, ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, SECY आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। जैनेट येलेन एक्चुअली वाज इन इंडिया लास्ट वीक, सो लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी इंडिया आई थी, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। So India is Asia's third largest economy is India, है ना, and one of America's indispensable partner. तो इंडिया जो है अमेरिका का एक indispensable partner है। Okay, so that is what is being discussed here. तो इसमें बहुत सारी चीजें, like for example citing Ukraine invasion, asserting Moscow had weaponized its supply of natural gas to Europe as well as challenges etc and all. तो इसमें बहुत सारी चीजें देखो, एक्चुअली ऑथर ये बात कर रही है कि पहले, इससे जस्ट पहले, मींस when Donald Trump was the president, it had taken some stand which was actually not very good for India. Okay, जैसे withdrawal of free duty access to GSP, generalized system of preferences, ये काफी बड़ा चीज बना था। देखो एक्चुअली क्या है, this was actually a policy of USA to charge less tariff from developing nations. So earlier India was a part of it. Later on in 2020, actually India was removed from this list. So now from that, after that, India was not getting benefit of preferential tariff system. यानी क्या होता था, यूएस ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का, जिसमें जो डेवलपिंग नेशन लाइक जैसे लीज डेवलपिंग, जैसे इंडिया को भी उसने रखा था जीएसपी के अंदर, तो इंडिया को बेनिफिट होता था कि जब इंडिया अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था तो कम टैरिफ लगता था वहां। बट दिस वाज रिमूव्ड, रिवर्स्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप इन 2020. So it was actually considered as not very good thing. इसको बहुत अच्छा चीज नहीं माना गया था, because of course it was a bad decision for India, and that was one thing. लेकिन अभी recent जोए बिडेन ने, means it is actually not that much you can say harsh, or you can say the policies are not that much bad for India. So for example, recently I hope you are aware, अभी recent news थी ये, one days back, why has the US removed India from currency monitoring list? So this is a good decision for India. So earlier India was also under currency monitoring list, now it has been removed from this list. So I am giving you a homework, इसको जाके आप थोड़ा सा पढ़िए कि what is currency monitoring list, why India was there and why USA has removed it. क्यों USA ने currency monitoring list से इंडिया को हटा दिया? So it's a good news for India. तो आप ये कह सकते हो कि आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मींस नाउ द जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपैरेटिवली बेटर, यू कैन से, इन दिस केस फॉर इंडिया, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यूएस इज स्टिल टू रीस्टेट जीएसपी, लेकिन अभी भी जीएसपी इंडिया को वापस नहीं मिला है। तो जो बिडेन हैज कम टू पावर, बट स्टिल जीएसपी व्हिच वाज टेकन अवे बाय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन गिवन टू इंडिया। तो अभी तक ये दोबारा इंडिया को वापस नहीं मिला है, ठीक है, बट लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट विल हैपन। Notwithstanding, USA is one of India's largest trading partner. तो of course इंडिया का सबसे one of the largest trading partner है USA, रैंक 1, 2, 3 में जनरली रहता है, ठीक है। So that is why it's also important for us, ठीक है। इसको भी पढ़िएगा, दोनों चीज, generalized system of preference, read this and read this, currency monitoring list, both are important. Okay, yes. Before moving on, there's a small announcement. We are having an A-Late revision series at 4 p.m. तो एक 6 नवंबर को I did. Then on 13 को I did. Other faculties are also doing. आज 15th है, so today at 4 p.m. we will be having Surajit sir on the same YouTube channel. Please subscribe to our channel, है ना? At 4 p.m. Surajit sir will be there. Then on 20th November, me again I will be coming back. And 17th November को Krishnendu Datta sir would be there. ठीक है? 4 p.m. पर this is an A-Late revision, but it is important for CLAT also. ऐसा नहीं है कि जो चीज A-Late के लिए important है वो CLAT के लिए नहीं important है, ऐसा कुछ नहीं होता है। We have given the name A-Late. But even if you are preparing for CLAT, you can watch these sessions, ठीक है? हाँ. Now let's talk about these two. देखो, एक है ईरान protest. So I hope you are aware there's a protest, hijab protest and all that started, ठीक है? So we don't need to go much in detail history, but have a basic idea. इसलिए कि this is not about India, this is about Iran, but basic idea about it.
देखो स्टार्ट कैसे हुआ. सो दिस अ गर्ल नेम्ड महसा अमीनी एक्चुअली, the death of Mahsa Amini actually was the reason for the protest against it. तो एक लड़की थी 22 साल की, उसका डेथ हो गया. कुछ लोग बता रहे थे कि पुलिस के द्वारा, ये इस तरह की न्यूज आ रही थी कि she was has not weared the proper hijab and all, तो उसकी वजह से she was arrested by police and she died and all. तो ये सब न्यूज थी. उसके कारण फिर क्या हुआ, she died I think in police custody maybe, हाँ. So that is why it was very much in the news, and after that the protest became very strong. So that is what it is. Women, life, freedom, these are the terms you can remember. We will fight and take Iran back. So these are the things actually that actually were in a protest. तो अब देखो क्या है कि ईरान न्यूज में, so ईरान जब न्यूज में है, so we should be knowing things associated with Iran. तो देखते हैं, अगर आप क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वो अगर ईरान न्यूज में, ईरान हिजाब न्यूज में, तो अब इंडिया ईरान रिलेशन से क्वेश्चन पूछ देंगे, है ना. सो दे आस्क क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद ईरान. सो व्हाट इज इंडियाज रिलेशन विद ईरान, इंडिया हैज मेड एनी पोर्ट और नॉट. इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद दैट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ईरान. चलो आप लोग फटाफट आंसर करते जाओ, ईरान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आई एम आस्किंग. कैपिटल ऑफ ईरान, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? तेहरान, बगदाद, दमास्कस एंड रियाद. एक और होमवर्क है, गो एंड फाइंड आउट करेंसी ऑफ ईरान. ये होमवर्क है. आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इन द स्टैटिक कमेंट कि ईरान की करेंसी कौन है, उसको स्टैटिक कमेंट में लिखना. यस, द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान. ओके, सो बगदाद किसी कैपिटल है? इराक की, है ना. दमास्कस सीरिया. रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया. ओके, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सो कैपिटल ऑफ ईरान इज Tehran, ये पता होना चाहिए. Now I am asking some previous year question because maybe they can repeat it, या उस type of question पूछ सकते हैं. So the question was asked last year in CLAT. Which of the following is correct about Chabahar port? And these are your options. What is the right answer? I'm waiting for your answers. कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी. सोनल उपाध्याय, देवादित्य, शुभम, अजीत, हरिओम, आयुष देशवाल, राखी, अभिषेक. यस, द राइट आंसर एक्चुअली इज सी. इट्स ऑप्शन सी. लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ ईरान, करेक्ट. इट्स मैरीन बॉर्डर इज मोर देन 300 किलोमीटर. देखो यहां पर है, दिखाते. सो हियर इज चाबहार, राइट. यहाँ पे ईरान है, समवेयर हियर यू विल फाइंड चाबहार. इट हैज बीन बिल्ड बाय इंडिया, है ना. तो साउथ ईस्ट ऑफ ईरान, साउथ ये हुआ, साउथ ईस्ट ये हुआ. तो दैट इज व्हाई दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो गाइस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो गलत होना ही नहीं चाहिए, कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए. लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन. नाउ रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर इट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट एंड इट्स इंपैक्ट. तो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड कौन सी बात सही है? रीड इट एंड देन आंसर इट. I had discussed about international north-south transport corridor and all. ठीक है. What is the right answer? Yes, Riya Verma, Smita, Hariom, Surushi Sharma, Nancy, all are right. D is the right answer. तो क्या बोले? ट्रांजिट हब टू सपोर्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया. यस, ट्रांजिट हब मतलब क्या होता है? देखो, सो दिस इज सेंट्रल एशिया, ये वाला ना सेंट्रल एशिया. सो लेट्स से फ्रॉम मुंबई यू आर गोइंग टू दिस चाबहार and from here you can go to Central Asia. तो Central Asia जाने का रास्ता है, करेक्ट. अनदर इज एक INSTC है मुंबई से ऐसे करके, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. सो चाबहार इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट द नेक्स्ट इज, it will optimize logistic cost by bringing efficiency in creating a reliable safe transport corridor. yes, ये तो कॉमन जनरलाइज स्टेटमेंट है. तो जनरली याद रखना, अगर एक से दो स्टेटमेंट सही हो गया तो डी ही करेक्ट होगा. And I'll give you one hint. Generally speaking, अगर all of the above है ना, so in CLAT, most likely the option would be all of the above. It will not always work, but yes, बहुत सारे केसेस में अगर आप देखोगे recent years में, अगर वो all of the above ऑप्शन डालते हैं तो चांसेस ज्यादा होता है कि वो सही होगा. और अगर A and B करके आंसर आ रहा है तो ये वाला चांस ज्यादा होता है सही होने का. 2021 में भी ऐसा देखा गया, 2022 में भी.
बिकॉज इफ यू आर राइट वन, अगर दूसरा भी करेक्ट हो जाए तो अपने आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे इफ यू नो कि ए बी में कोई एक करेक्ट है तो कम से कम ये तो एलिमिनेट कर दोगे आपकी, ये तो नहीं होगा, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव मिले तो कोशिश करना कि अगर वहां तक पहुंच रही है बात, एक से दो भी सही है तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। यस, देखो रिपीटेड क्वेश्चंस आता नहीं है, अग्रीड, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंसान लर्न करता है, ओके। So that is why I give you sometimes previous year question. Chabahar Port is a result of trilateral agreement with which of the following? Trilateral मतलब तीन नेशन। अगर आपने मैप देखा होगा गौर से तो आप आंसर कर लोगे। If you have seen, I have told you Chabahar Port has been built by India, मैंने कई बार क्लास में बताया है। तो जब इंडिया और चाबहार पोर्ट ईरान में, ये भी आपको पता है, तो इंडिया और ईरान तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड डी, राइट। सो दैट इज इट्स वेरी इजी। चाबहार पोर्ट हैज बीन बिल्ड बाय इंडिया इन ईरान, तो चाबहार पोर्ट को इंडिया ने बनाया है, उसके एक पोर्ट को, और ईरान में है चाबहार पोर्ट, तो इंडिया और ईरान तो पक्का होना चाहिए ऑप्शन में। सो सी एंड डी यू हैव एलिमिनेटेड इट। नाउ यू आर लेफ्ट विद दीस थ्रू। अब देखो, हमने मैप में कई बार बताया है कि बेसिकली इट गोज लाइक दिस, मुंबई से, जैसे जैसे ये है मुंबई, ठीक है, और यहाँ ईरान, तो ईरान से अफगानिस्तान जाने में यहाँ पे जरंज दिलराम हाईवे, मैंने कई बार पढ़ाया भी था क्लास में, जरंज दिलराम हाईवे, दीज आई हैव डिस्कस्ड इन पेड क्लासेस आल्सो, ओके। सो टू अवॉइड, लेट्स से यू हैव टू गो फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, सो यू हैव टू क्रॉस पाकिस्तान, तो उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह चाबहार पोर्ट बनाया गया है, चाबहार पोर्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन रीच अफगानिस्तान, ओके। यस, इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाई कम से कम आप तो दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर देते है ना, यू कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड दीस टू ऑप्शंस। तो एग्जाम में जो है ना वो कॉमन सेंस ओपन रखना है। इन एग्जाम यू हैव टू बी केयरफुल, कॉमन सेंस यू हैव टू बी केयरफुल इन एज फार एज कॉमन सेंस इज कंसर्न, कि कैसे एलिमिनेट करना ऑप्शन, ठीक है, कि इंडिया चाबहार पोर्ट इंडिया ने बनाया तो इंडिया तो होगा, ईरान में है तो ईरान भी होना चाहिए, तो ये दो तो होगा, यहाँ पे इंडिया ईरान नहीं है, यहाँ पे इंडिया ईरान नहीं है। So just go try to then reach to the answer. This is how actually, देखो CLAT में they do not expect only knowledge, they want you to be smarter. आप एग्जाम के अंदर स्मार्ट हो कि नहीं, आप समझ रहे हो ना, that is why they expect you to be smarter also, not only having a big knowledge, ठीक है। So yes, so this is the exam is all about. Now let's move on to the next one. ये आपको पता होगा होपफुली, आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, T20 वर्ल्ड कप हैज बीन वन बाय इंग्लैंड। तो कुछ होमवर्क है, फर्स्ट कि कब हुआ, वेन्यू, वेयर इज द वेन्यू, ओके। नाउ फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, गो एंड फाइंड आउट, ओके। नाउ व्हाट वाज द मोटो, कोई मोटो है कि नहीं, वेदर देयर वाज एनी मैस्कॉट, कोई मैस्कॉट है कि नहीं इसका, गो एंड फाइंड आउट दीस थिंग्स, फाइंड आउट एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अच्छा, फाइनल में कौन कौन गया, हु वन इट एंड ऑल, ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया। Now, there's an article by a former IAS officer, Mr. Amarjeet Sinha. He's a ex-IAS officer from Bihar cadre. So he has written an article about India's Human Development Index is 132. So India का जो Human Development Index है, it is alarming. 132 is not very good. तो alarming मतलब थोड़ा serious है, 132 अगर रैंक होना अच्छी बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है। National Education Policy states national mission on foundation literacy and numeracy will set up on a priority for attaining universal foundation literacy and all. So he is actually talking about this, कि in all primary schools identified state-wise targets and goal to be achieved by 2025, यानी 2025 तक this has to be done, okay? क्या कि foundational literacy and numeracy will be set up, यानी जो basic literacy है और numeracy यानी numbers ऐड करना, multiply करना, जो basic numerical skills है, that everyone should be knowing, should be done by 2025 in all primary schools, है ना। यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी इसको सक्सेसफुल बना देना है 2025 तक, है ना। दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। नाउ ही इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ बिहार एजुकेशन पॉलिसी। आई वुड सजेस्ट कि स्टेट वाइज उतना एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बिहार एजुकेशन पॉलिसी का ही हैज गिवन एन एग्जांपल, देन ही हैज गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ राजस्थान आल्सो, ठीक है। सो ही हैज गिवन सम एग्जांपल्स एंड ऑल। ये पूछा जा सकता है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, that which judgment of Supreme Court talked about right to education as a fundamental right। तो यहां लिखा हुआ है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, सुप्रीम कोर्ट सेड कि right to education up to 14 years of child is a fundamental right। तो एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन केस में कहा। बाद में लेटर ऑन गवर्नमेंट एडेड आर्टिकल 21 कैपिटल ए। आर यू अवेयर ऑफ दिस आर्टिकल? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? आर्टिकल 21 कैपिटल ए
was added by the, you can say, parliament. By which constitutional amendment? I am giving a homework. So in in dashed constitutional amendment 2002, the parliament inserted article 21 capital A, which says right to education is a fundamental right for 6 to 14 years and all. ठीक है, तो मेरा होमवर्क ये है, होमवर्क इज फाइंड आउट कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट inserted article 21 capital A. Okay, is it clear? Is it clear, guys? Yes. हाँ, 84th, right? हाँ. Yes, Preeti Kashyap has answered. 84th, I think 86th hai. Please check it. As far as I remember, it is 86. But go and find out. I am giving you as a homework. जब class खत्म हो जाएगी, after that, write in the comment section. As far as I remember, it is 86th. ठीक है? हाँ. But please check it. हाँ. Okay. So now he's talking about सर्व शिक्षा अभियान. तो एक अभियान शुरू किया गया था 2001 में, along with UNICEF. So UNICEF would be helping this. सर्व शिक्षा अभियान to ensure universal literacy. Elementary education. Elementary education generally is given for a children from 6 to 14 years of age. 6 से 14 साल के बच्चे को जो बेसिक एजुकेशन है वो देने की बात कही गई थी. उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था. To provide, let's say, infrastructure, uniform, toilet, water, textbook availability, etc. Later on, this has been subsumed under this अभियान, समग्र शिक्षा अभियान. तो इसके अंदर अब वही चला गया. देखो आप, if you read it carefully. Just go and read something about it. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, and teachers education. Now all these three are now under this initiative, समग्र शिक्षा अभियान. So go and read. थोड़ा सा पढ़िएगा because वो schemes पूछ सकते हैं एग्जाम में. Okay, yes. Now let's talk about significance of Bali Summit G20. इसको पढ़िएगा. Once it will be done, we will be discussing. Complete हो जाएगा तो we'll be discussing about it. Then there's an article, Places of Worship Act has been challenged in Supreme Court. So Supreme Court has asked center's advice, center's opinion. So center has said, I need some time. ठीक है. So Places of Worship Act को challenge किया गया, 1992 Places of Worship Act. So Supreme Court ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. Okay, so just you should be knowing it. So that is what it is saying. Now the next is Biden Xi look to responsibly manage competition amid rising tensions. So actually both Joe Biden, the president of USA, and Chinese president Xi Jinping met in Bali. Okay, तो अभी मंडे को मुलाकात हुई दोनों की. तो let's see on the sidelines of G20 summit at Bali. So if anything concrete will come, we'll be discussing. ऐसे आप इसको एक बार पढ़ लेना, go through it, है ना? So these are our last lab to CLAT session, which is happening at 9 p.m. Okay. So tomorrow we'll be having session with Nivedita ma'am on 19th November with Abhimanyu sir, and 20th November Abhimanyu sir. 9 p.m. पे रात में होगा. So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Telegram, Facebook, etc. and all. Please press the like button, share this video, and subscribe to our channel. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.